All right, good morning, everyone. Welcome to this session on interview preparation and training. Before we proceed further, I would just like to have a quick check with regards to the audio and video for the session. I hope I'm clearly audible. There is no voice break. And at the same time, you are able to see the slide number one, which is interview preparation and training. Just to confirm and inform you one more thing, whatever I'll be putting across to you during this particular session, whatever I'll be saying across, whatever we'll be discussing across throughout the entire session, that would reach to you at a delay of almost 6 seconds. Yeah, 6 seconds would be the delay. So let's say if I have explained you something and you have put up your query in the chat box, don't worry. Throughout the entire session, I have a constant eye on chat box. I'll be able to see what are your queries, what are your doubt, where is it, where you need support, all those stuffs in. So maybe it might just happen that I might resolve your query at the end part of the session or during a particular concept being correlated. But most importantly, don't worry, each and every query will be answered throughout the entire session. Before we get going, I would like to have a big vote of thanks for the entire support from the PharmaUDAAN team and the APTI Mumbai region for giving PharmaElite an opportunity to conduct this session with regards to interview preparation and training. Most importantly, the biggest support which we got for conducting this session from Somani sir, wherein we will be able to pass across what we have learned throughout this entire 4 to 5 years of journey with regards to training students for interview preparation. Most importantly, throughout the session, I request you that if you have any doubts, any questions, please feel free to put it in the chat box. We'll be more than happy to answer each and every question there and there itself. I hope we are good to go. Can I get a quick confirmation from all of us in the chat box? A quick yes. Neha, Namrata, Mitali, Akash, Tushar, Mayuresh. Don't worry, it's going to be a very easy session. You might be wondering, I'm still in second year only. Why am I sitting for this session on interview preparation and training? If I'm only in third year, why am I sitting for this particular session? There are multiple reasons behind it. Why is it that you should know now that what is the skill set required to be interview ready? It should not happen that मैं final year में आया and then final year में I realized that yes, these are the required skill sets to get ready for an interview, and maybe it is too late. So the major objective of conducting this session with the entire support of Somani sir and the APTI Mumbai region and the PharmaUDAAN team is majorly to ensure just one thing, that you get started with regards to interview preparation right from day one. It's not something which you are going to start with preparation a day prior when you are being scheduled for an interview. That's how the entire things are going to be different throughout the session. If you have any queries, any questions, don't consider that any query is not a big query, it's a silly question. Not the case. Whatever doubts, whatever questions you have, please feel free to put it up in the chat box. I'll be more than happy to answer all of them. Sure, let's get going. Before we get starting with this entire session of interview preparation and training, let's try and understand few simple things. When we talk about interview preparation, what is it which first comes to your mind? It might just happen that many of us turn out to be nervous. We don't know how to go about. Many of us are doubting that whether I'll be able to crack this interview or not. Many of us might be just thinking that is it the right career option what I want to go for. So you might have observed that in the registration form which you got, आपको जो registration form मिला था, उसमें एक नीचे और एक highlight था that glimpses of different career opportunities. So whenever you are going for any interview, one of the most important prime thing which you should remember is you should be very clear that whatever you are going to appear for an interview is the field of your interest. Understand? Out of 24 hours a day, you are going to spend one third of your day at work. It's very important that you love what you do. It should not happen that you are just doing it for the sake of doing. सिंपल रीजन बिंग, अगर आप वो काम करोगे जो आपको पसंद है, अपने आप उसमें एक्सेल करोगे. यू वोंट नीड एनी एक्सटर्नल सपोर्ट टू एंश्योर दैट यू गेट द रिक्वायर्ड सपोर्ट. यू जस्ट हैव टू एंश्योर वन मेजर थिंग. आप जो भी काम कर रहे हो, इट्स फ्रॉम योर इंटरेस्ट पर्पस, it's something what you want to do, and it is something which you will do for your betterment. Don't worry, as I go further, I'll stress on to this point to say. First, let's get started with the entire discussion. Here we go.
I'm sorry, I hope I'm clearly audible now. Sorry, I lost the connection in between. Just a quick confirmation and once again in the chat box, students. Can I get a quick confirmation again in the chat box, please? All right, thanks, Atharva. Thanks a lot. So we were talking about interview preparation and training with regards to different phases. As I said initially, interview preparation and training is not just one part which you will be doing few days before your interview. It is something for which we are supposed to get ready right from day one. It's not going to happen overnight. First and foremost thing. Second thing, before I proceed, I'm sorry if at all network issues happen. Please wait back. I'll be rejoining within next few minutes, maximum within next 10 to 15 seconds. I'll be back again. So please cooperate. I'm very sorry for the network disturbances in between. Third thing, when we talk about interview preparation, it's being bifurcated into different areas. One thing, interview preparation would first and foremost thing require you to share your resume, which is basically your curriculum vitae, which is basically your CV. Now, what happens most of the time is, if your CV is 10 pages long, आपने बहुत कुछ किया है आपके career में, but do you think someone has the time as a HR? Do you have the time to go through almost so many curriculum vitae? Will you be able to see each and every CV, each and every student, what they have done through? No, no one is going to read that 10 pages CV, right? We are going to be very specific about क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. सेम वे एवरी एचआर, लेट्स कंसिडर आप एचआर हो, आपको कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करना है, आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देखोगे which will be of your interest in every CV. You're not going to read that 10 pages CV. So what do you mean to say? I basically mean to say that whatever resume or whatever CV you make, it has to be as small as possible. At the same time, it has to convey ऑल द रिक्वायर्ड प्री रिक्वेजिट्स. फिर वो एक पेज का बने या दो पेज का बने, वो इतना क्वालिटेटिव, आई रिपीट द वर्ड, इट हैज टू बी क्वालिटेटिव. इट्स नॉट सपोज टू बी क्वांटिटेटिव, जो किया है सब भर भर के डाल दिया, नहीं. The biggest art is to compile whatever you have done in the smallest possible way, and that's what you have to do. So we'll talk about resume or CV preparation as well. Tomorrow, when you go to placement times, you might come across another phase of interview preparation, which is basically group discussion. नॉट ओनली दैट, आप जब जीपैट के बाद नाइपर लिखते हो और अगर आप नाइपर में फार्मा एमबीए करना चाहते हो, अंटिल 2020 नाइपर में फार्मा एमबीए के लिए भी ग्रुप डिस्कशन होता था. नाउ ग्रुप डिस्कशन इज नॉट समथिंग व्हिच वी यूज्ड टू हैव एज अ डिस्कशन अमंगस्ट आवर friends all together. Group discussion has to be very professional, it has to be very healthy. The reason why they conduct a group discussion is just to understand that कल आप जब कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे एक ही कंपनी के अलग अलग लोग डिबेट कर रहे हैं, let's say there are 10 to 15 people discussing from different departments about one thing, how you take care of the opinions of others and how you put across your word is the major thing. Understand, communication skills is not only about me knowing to talk English. No, it doesn't make sense. Communication skills is more about you putting across your word in a way that it is convincing to the opposite person, and at the same time you can convey what you want to convey. So group discussion is a totally different way altogether. Most of the people kind of get eliminated over here because there are 10 to 15 people at a go. You have to be very calculated. Don't worry, I'll speak about group discussion going ahead as well. In the last phase of it, once you are through with resume, CV, then you group discussion. The next phase which comes into the picture is personal interview, one to one, जिसको PIB बोलते हैं. सिर्फ आप और द इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है. अच्छा, इसमें भी दो फेज होते हैं. One will be your technical round, where you will be asked technical things. Let's say if you are going for a job interview in R&D, आप सुटिक्स में मास्टर्स कर चुके, जस्ट माई केस इन आई परस्यूड माई MS इन फार्मास्यूटिक्स, तो मुझे सुटिक्स के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड एट द सेम टाइम आई विल हैव सम क्वेश्चंस व्हिच विल बी फ्रॉम HR बैकग्राउंड. यस, HR के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं व्हिच आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेज. एंड टू बी ऑनेस्ट, most of the jobs whichever you will do, whichever you are doing, all those jobs would require probably 20 to 30% of your technical knowledge. Obviously technical knowledge ज़्यादा matter करता है. I'm not saying technical knowledge लगेगा ही नहीं, but at the same time how you talk to people, how you communicate with them, how you put across your word is going to be the major game changer. So step by step we'll cover into each and every aspect of it. Don't worry, this video is always going to be there over here. ये वीडियो यहाँ से कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा. No need to write anything, no need to screenshot anything. Whatever questions, whatever doubts you have, please put it up in the chat box. And once again, before we get going, big thanks to Somani sir, Deepak sir, Praveen Nayak sir, entire PharmaUDAAN team for helping and supporting for this session. Are we able to know something new? कुछ ऐसा सुना या कुछ ऐसा पता चला जो अभी तक पता नहीं था?
or is it something conventional which all of us know? Can we have a quick yes or no in the chat box? Rekha, Trishul, Anu, Nilesh, Anand. Don't worry. If you have any other queries, please post it up in the chat box. So as I proceed further with the session, I'll make all the required changes so that we can aptly cover each and every aspect. Come on, just a quick yes or no. Is it something new or conventional जो हर कोई आता है एक slide play करता है देख बताता है and चले जाता है? Can I have some discussions in the chat box? Yes? Alright, sure. Good to go. Let's start with one by one every phase of the entire interview preparation session. First and foremost, let's say एक रियल लाइफ एग्जांपल से कोरिलेट करने का ट्राई करते हैं. मैं अगर अमेजोन से कुछ बाय करने जाता हूँ, ठीक है अथर्व, तो अगर मैं अमेजोन से कुछ बाय कर रहा हूँ हर्षदा, विल आई परचेज इट डायरेक्टली? नो. आई चेक एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट. मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज पढ़ता हूँ, प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई रीड दैट. प्रोडक्ट के रिव्यूज पढ़ने के बाद सेकंड थिंग व्हाट आई डू इज आई कंपेयर इट विद सम अदर प्रोडक्ट्स. तो शायद वही प्राइस कैटेगरी में हो या वही एप्लीकेशन में, करेक्ट. एंड बिफोर बाइंग दैट प्रोडक्ट प्रोबेबली आई इंक्वायर विद समवन नोन टू मी. जो वर्ड ऑफ माउथ का रेफरेंस होता है, जो आपको आपका दोस्त बोलता है अरे ये अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, दिस प्रोडक्ट इज गुड, दैट प्रोडक्ट इज बैड, वो वाला रहेगा थर्ड जस्टिफिकेशन और द थर्ड सैटिस्फैक्टरी ओपिनियन फॉर यू दैट यस व्हाट एवर इज बीइंग सेड इज वर्किंग. सो पर्सनल ये आप ये तीन एस्पेक्ट देखते हो कि प्रोडक्ट का कंपेरेटिव रिस्पॉन्स कैसा है, प्रोडक्ट का हिस्ट्री एंड प्रोडक्ट का वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो आपके फ्रेंड्स के थ्रू, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ होती है. नाउ लेट्स से आप एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. फ्यू मिनट्स बैक आई जस्ट टोल्ड यू यू आर गोइंग टू स्पेंड 1/3 ऑफ योर डे. कहीं पे वर्किंग आवर्स 8 आवर्स है, कहीं पे वर्किंग आवर्स 9 आवर्स है, कहीं पे कोई कंपनी में वर्किंग आवर्स 12 आवर्स भी है, डिपेंडिंग अपॉन द जॉब रोल यू गेट इनटू. So 1/3 of your day out of 24 hours, let's say, you are going to spend at your work. Don't you think it is very, very, very important that you are at the right place and you are enjoying what you are doing? Because if you are not enjoying what you are doing, it's not going to make sense. Trust me. अगर मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जिसमें मुझे मजा नहीं आ रहा, आई विल नॉट एबल टू परफॉर्म. अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. व्हाई डू वी गेट सैचुरेटेड व्हेन वी आर स्टडिंग? बहुत बार होता है थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा, एक शॉर्ट नोट पढ़ा एंड देन आई एम सैचुरेटेड. व्हाई डज दैट हैपन? The probable reason why this is happening is because I got saturated faster. I'm not enjoying the topic. Now let's go back to our childhood days. Remember those simple days where we used to play the entire day? पूरा का पूरा दिन हम खेलते थे. Will we ever tired? No. After playing the entire day, we were playing again in the night. सुबह कोई दूसरा गेम, शाम को दूसरा गेम. Why were we constantly playing? Because we were enjoying what we were doing. Same thing applies to your studies. If you are enjoying what you are studying, trust me, no one ever has to come and tell you, "Arey पढ़ ले." If you are enjoying what you are working at, no one has to ever push you that your this assignment is pending, that work is pending. It's not required. So it all depends upon where you are and what you are doing. So first and foremost thing, before applying for any opening, before applying for any job interview, जो मेजर 90% ऑफ द क्राउड गलती करता है वो यही नहीं देखता है कि उसके इंटरेस्ट का फील्ड है कि नहीं. They just go on clicking on apply, 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 apply. सब करते हैं, including me. Everyone does that. But that's very wrong. Reason, when you do such things on portals like LinkedIn for applying for a job, what happens? LinkedIn starts bifurcating your behavior. LinkedIn is a AI tool. वहाँ पे तुम्हारे मेरे जैसा कोई ह्यूमन नहीं बैठा है जो ये देखेगा कि ये फार्मा बैकग्राउंड का है, ये फार्मा के जॉब अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर रहा है, तो इसको फार्मा का ही ओपनिंग्स दिखाना. दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑन इट्स ऑटोमेशन. बट नाउ लेट्स कंसीडर आपने लिंक्डइन पे जॉब ओपनिंग्स देखी जिसमें फार्मा के बदले इंजीनियरिंग है एंड यू आर स्टिल क्लिकिंग ऑन अप्लाई, 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 अप्लाई. The entire AI system will get it wrong. I've seen a lot of my friends talking about not able to identify job openings on Naukri.com and other portals. Why? You're probably not selecting the right filters. So there is a big scope in itself to identify how to search jobs. How to search jobs itself can be a totally big session. And trust me, the amount of opportunities which are in the market are too many. Probably we are not able to identify where is it where our interest lies. So before you apply for an interview, check few things, and before you go for the interview, the personal interview, you need to be aware about few simple things. First and foremost, you need to read a lot about the company. Why? Whichever company you are going to, where you are going to devote your time, you should know A to Z of that company. You should be able to observe where they started, how they have grown over a period of years. You might have read a lot about merger and acquisition. सुना है कुछ ऐसे terms सुना है आपने? I suppose हम some pharma industry से है.
we are looking at a lot of merger and acquisitions happening across pharma industry. Have we heard about this or we haven't? Come on, just a quick yes or no. It has to be a dialogue, friends. Sakshi, Lekha, Annu, Kishori, Nakul, Rushikesh, Ratnaraj, कुछ सुना है Fenil? Are there a lot of merger and acquisitions happening around? How many of us have heard about Curatio? Curatio Healthcare, which was, Chennai-based company, which is probably being going to sold out. It's in the process to be sold out to one of the pharmaceutical companies. सेम वे लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सीपेंट कंपनीज जो रॉ मटेरियल बनाते हैं उनके भी बहुत सारे मर्जर एक्विजिशंस हो रहे हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन यू कम अक्रॉस दिस मर्जर एंड एक्विजिशन इज दो डिफरेंट कंपनी साथ में आ जा रही, दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वन कंपनी. Now, there might be multiple reasons behind why these things are happening. And understand, let's say tomorrow if I join some XYZ company, कल वो कंपनी कोई और कंपनी के साथ मर्ज हो चाहती. But what if both the companies didn't have the same vision? What if both the companies didn't have the same mission? When you talk about companies belonging to Tata's, they almost have the same vision, mission, and all. But if you just move across to some other domains, some other areas getting connected, do we expect to get the same response? No. So probably merger and acquisition as a term आपने ज़्यादा नहीं सुना, which I could understand from the chat box. No worries, just let's keep it for the end. I'll rediscuss it at the end in detail. What I mean to say is आपको कंपनी के मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. Like a lot of us knew during Zydus Cadila, Zycovid vaccine. I hope you all were aware, right? Because they were going to be the first intradermal vaccine. बट शॉकिंग पार्ट ये सिर्फ सब फार्मा वालों को ही नहीं, नॉन फार्मा वालों को भी पता था. आई एम टॉकिंग अबाउट मर्जर एंड एक्विजिशन जो स्पेसिफिकली फार्मा में ही होते. डिड रिलायंस बाय आउट बिग बाजार? कुछ ऐसा हुआ था रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक. नो, दैट वाज नॉन फार्मा. उधर भी मर्जर एक्विजिशंस हो रहे एंड दिस वुड कीप हैपनिंग टू एंश्योर दैट द मार्केट सस्टेन्स इटसेल्फ. एक अपने में बड़ा टॉपिक है, विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. सो व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू फर्स्ट बिफोर आई गो अक्रॉस टू different thing. Krishna, I've read your query. I'll respond it at the later phase. When I'm applying for an interview, मैं कंपनी के वेबसाइट पे जाऊंगा, मैं कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ूंगा. उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, what are the different sources, services they are offering, what are the different products they have. Most importantly, we all are seeing a lot of layoffs happening around in the entire industry with the so-called recession being stepping around. But trust me, if you are irreplaceable, if you are doing something for your company which only you can do, that recession is never ever going to hit you. But you might have seen Facebook laying off so many employees, then again Twitter laying off so many employees, Byju's almost 25% of its workforce. Annual revenue is something which the company is going to pay for what you are going to work there. It should not happen that the company is bootstrapped and it's still in losses. Like, take example of Zomato. Is Zomato still in profits? Yes, it has got multiple income resources, it has got different diversions, all said and agreed, it's on a positive note. But till date, are they positive? No, they are still in losses. So basically, be careful. I'm not saying you should not go to Zomato. Understand, these are two different things. You're just doing a background check. Generating fundings, buy fundings, it will have a way of survival further. Be clear who is the one who is leading that particular company, because that person's vision, that person's opinion has got a lot of differences to be made around. Next most important thing which we have to consider is be clear about what is written in your own CV. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे CV में कोई ऐसा पॉइंट लिखा है जो मुझे ही नहीं पता है. So if that is the case, where my curriculum vitae mentions something which I myself not aware about. होता है ना, हम लोग सब लोग सीनियर्स के CV उठा लेते हैं और सीनियर्स के CV में जो जहाँ पे होता है हम सिर्फ चैट बॉक्स उसके टेबल में जाते हैं और टेबल में सिर्फ अपना परसेंटेज एडिट कर लेते हैं. Rest everything stays the same, right? मयूर, आदि, कृष्णा, गौरी, मैं खुद करता था. It's not that only you do it. Probably all of us do it. The problem is हम सबके CV का फर्स्ट लाइन सेम दिखता है. To work across a challenging environment and all those things. अभी अगर मैं HR हूँ और अगर मेरे पास एक ही कॉलेज से 50 CV आए, आपके बैच में 60 लोग हैं या 15 लोग हैं if you are pursuing MPhA, and all those entire 50 CV mention the same thing, same title line. Am I interested to read that CV in detail? No. Probably I might just end up reading the table which is going to talk about your experiences and probably your scores. That's where you can create a difference. अगर सबका टाइटल लाइन सेम है, तुम तुम्हारा टाइटल लाइन अलग बनाओ ना. Understand, before you reach the interviewer, it is your curriculum vitae, it is your CV which reaches the interviewer. अगर वो impressive होगा, अगर वो interesting होगा,
only then there is a chance of further rounds of interview. अगर आपका सीवी कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, अगर उसमें सब कुछ कन्वेंशनल है, then you expect a conventional response. अगर कुछ अलग करना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा. That has been the evergreen tagline which I have always applied in my life. If you are doing same conventional things, अगर हमेशा ना आता था वो सीवी भेज के, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हम हमारे एंड पे कर रहे हैं, which we need to rework on to improvise onto it and to make it better. Next most important thing, many of us in our curriculum vitae mention some specific skill sets. We mention experienced in this XYZ thing, able to work under pressure, able to work in a challenging environment. Ensure that जब भी आप कुछ ऐसे statements use करो, you always have something which is supportive as a real life example. अगर मैं बोलूँ कि I am very good at time management, I should have some classical examples of time management. Let's say from all of you, someone might be a good musician and उसका Instagram पे channel है, YouTube पे channel है, and you constantly put across music. So, with your daily schedule of studies where you are balancing what is supposed to be done, at the same time, you are enjoying your passion, you are putting out time for it on priority. अगर घर आके कल तेरा असाइनमेंट सबमिशन है या कल तेरा पेपर है, फिर भी द फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज प्ले दैट गिटार, record a voice note, put it across on Instagram before you start studying because it's your priority. Somewhere you have managed your time if your scores are not being compromised. So when you say time management, you need to have such instances, such real life examples with you. Most importantly, before you go on to the job interview purpose, be clear about what is the job profile they are expecting to you. Be clear that what is the job description being given. क्योंकि job profile और job description आपको clearly बता देगा that what is it which is expected from your end. So you should be practically ready for that particular phase as well. Most importantly, जो हम में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं, including we as well, including probably you as well, what you will be repeating in future is, हम में से बहुत कम लोग प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंटिवली सुनते हैं. व्हेन आई से प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंटिवली, आई डोंट मीन दैट वो एक एक वर्ड बोल रहा है तो उसको सुनो. प्री प्लेसमेंट टॉक में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे क्वेरीज वहीं क्लियर हो जाते हैं. कंपनीज के कितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, कंपनी कब एस्टैब्लिश थी, तो जो हिस्ट्री तुम पढ़ के गए हो कंपनी के बारे में, कहाँ मिलेगी वो? कंपनी के वेबसाइट पे. येस, देयर माइट बी फ्यू कंपनीज शायद जिनकी वेबसाइट ही ना हो, और अगर उनकी वेबसाइट होती है तो शायद उस पर उनकी हिस्ट्री नहीं होती. देन इन दैट केस यू नीड टू गेट idea about their entire profile from some mutual colleagues. Nextly, be clear about readiness for few answers which are going to be some common questions. आप कोई भी इंटरव्यू को जाओ, आपको सबसे पहली चीज जो पूछी जाएगी दैट वुड बी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हर कोई आपको उसका खुद से आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा. एंड इफ यू माइट हैव रेड दैट मैसेज इन विच यू गॉट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और द ज्वाइनिंग लिंक, वहाँ पे एक चीज लिखी थी, हाउ टू ड्राइव द इंटरव्यू. ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार पर्सनल इंटरव्यू के राउंड तक पहुंच गए, इट्स टोटली अप टू यू. यू आर द वन हु कैन ड्राइव द एंटायर इंटरव्यू. आई एम नॉट जोकिंग. अगला 15-20 मिनट जाने दो, आई क्लियरली शो यू दैट यू आर द वन हु इज गोइंग टू ड्राइव द इंटरव्यू. यू आर द वन हु विल इनडायरेक्टली डिसाइड कि इंटरव्यूअर आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यूअर. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट फ्यू थिंग्स. सो वो जो कॉमन क्वेश्चंस का पार्ट है जो यूजुअली हर जगह पूछे जाते हैं, वी हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर दैट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन. So far whatever we have discussed, is it all good? I hope I'm not boring you. I hope we are not slow. I hope we are not too fast and you're able to register whatever we are discussing across. Can I get a quick confirmation in Adi, Anu, Sakshi, Prasad, Mayur, Krishna, Gauri, Sid? Are we enjoying it? I don't want it to be monotonous. Come on. Thanks, Junaid. Thanks for confirmation. ऑलराइट, लेट्स गो. तो ये हो गया बेसिक जो आपको हर जगह पे हर इंटरव्यू में कहीं ना कैसे पूछा जाएगा. इट्स गोइंग टू बी वन पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन. So there is a question from Fenil which says, sir, before interview there are aptitude tests. If we qualify the test, then they take the interview. So how to deal with the aptitude test? So on point question, Fenil. Aptitude test is a kind of question paper which a good number of companies have, but not every company has. And aptitude test most of the time जब companies on campus आते हैं, like let's talk about Novartis. Novartis जब भी on campus आता है, Dr. Reddy's जब भी on campus आता है for interviewing purpose, they first and foremost always have some aptitude test so that they can cut down on the number of attendees. तो aptitude test के लिए separately prepare करना पड़ेगा. Since you have asked the question and I didn't discuss about it initially, let's put it across over here only.
तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस एप्टीट्यूड टेस्ट वुड जस्ट कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स. One of the major things which this aptitude test would comprise across will be of mathematics, जिसको कॉन्ट्स भी बोलते हैं, जिसको मैथ्स भी बोलते हैं. एक हो गया कॉन्ट्स, और कॉन्ट्स के साथ दूसरा होता है वोकैब विच इज बेसिकली इंग्लिश. तो आप बेसिक कॉन्ट्स, बेसिक वोकैब्स, ये सारी चीज़ें करके जाओ. अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कॉन्ट्स के बारे में कैसे पढ़ना है, वोकैब्स के बारे में कैसे पढ़ना है, पैसेजेस आते हैं कि मीनिंग्स ऑपोजिट आते हैं, what is it which appears and what is it which doesn't appear, just go to the play store, just type PHARMAELITE GPAT Academy, you will get our app over there. ऐप के अंदर इसके ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, एंड अगर टाइम रहा एंड में देन आई विल गो इन डेप्थ ओवर हियर एज वेल. बट जस्ट टू टेल यू, whatever this aptitude test type questions are there, these are not something hi-fi when it comes to pharma. Understand? Engineering वालों को कौन के questions एक अलग level पे होते हैं, but we being from pharma, we don't have these questions to that great depth. It is somewhere close to few areas of our 9 standard indices to somewhere close to our 7 standard scholarship exams. वो intelligence quotient test exams रहते थे ना, if you happen to remember, कहीं ना कहीं उससे correlated होते हैं. I hope I could answer your question briefly at least. Let's go further. तो फर्स्ट पैरामीटर से चालू करते हैं कि मेरा सीवी इंटरव्यूअर के पास पहुंचा है, एंड आई हैव टू एंश्योर दैट माय सीवी लुक्स इंटरेस्टिंग टू दैट XYZ HR in order to take the discussion further. Am I correct? Does everyone agree to it? क्योंकि अगर मेरे सीवी में वही लिखा होगा जो मेरे जैसे दूसरे 150-200 सीवी में लिखा है, तो मेरा सीवी क्यों पढ़ेगा मेरे दोस्त? कुछ अलग है ही नहीं, तूने वही लिखा है जो बाकी हर किसी ने लिखा है. Then why is it that you are expecting that you might end up with something totally different? नहीं होगा. So you have to be very careful about few basic things, that what is it which you are keeping on priority, what is it which you are keeping second on your priority list. तो जो भी आप सीवी बनाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग सीवी में सिर्फ ग्रेड्स, एक्सपीरियंस, ये सब के अराउंड फोकस करो. आई वुड एडवाइज यू टू हैव दैट फर्स्ट टैगलाइन बीइंग कैची एज वेल, which will generate interest from the interviewer कि भाई मैं पूरा का पूरा पढ़ूं. ऐसा क्या है कि इसने फर्स्ट 3 लाइन में कुछ टोटली अलग लिखा है. So step by step we'll discuss about all of them. Most importantly, few minutes back I told you that आप जो भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, be clear about the vision of the company. कंपनी क्या करना चाहती है लॉन्ग रन में. How many of us have heard about Sandoz? सुना है right? How many of us have heard about Novartis? Arshada, Fenil, have you all heard about it? Tanuja, Rushikesh? हम सब ने सुना है ये दो कंपनी के बारे में, बट हाउ मेनी ऑफ अस हैव हर्ड और हाउ मेनी ऑफ अस हैव ऑलरेडी नोन दैट सैंडोज एंड नोवार्टिस आर अ ग्रुप कंपनी. कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही कंपनी है. पता नहीं हम में से कितने लोगों को पता है ये बात. अच्छा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन टू एड ऑन टू मोर, सैंडोज एंड नोवार्टिस आर नाउ डाइवर्सिफाइंग. दे बोथ आर गेटिंग सेपरेटेड. अभी थोड़े टाइम पहले क्या बात किया था, मर्जर एंड एक्विजिशन, जहाँ पे दो कंपनी साथ में आती है. अब मैं बात कर रहा हूँ एक टोटली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट की, विच इज डाइवर्सिफिकेशन, दैट सैंडोज एंड नोवार्टिस आर नाउ गोइंग टू बाइफर्केट इनटू 2 डिफरेंट कंपनीज. अभी तक वो ग्रुप कंपनीज थे, बट नाउ दे आर गोइंग टू गेट डिफरेंट. You can read about this. There is a lot of information on Google about this Sandoz and Novartis diversification. So बहुत सारी इंडस्ट्रियल न्यूज है which unfortunately probably we are not aware about. Earlier on our app on PharmaElite Academy, we used to run daily pharma newspaper. Unfortunately कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं था, तो we had to stop it. But if you are interested, you want us to continue something like that back again, just feel free to write a WhatsApp onto this or email onto this, and probably if the number is big, we might get started back with the daily pharma newspaper. Understand? डे टू डे में फार्मा में जो हो रहा है वो हमको पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज समवेयर वी आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, वी विल नेवर बी अवेयर अबाउट व्हाट इज इंडस्ट्री आस्किंग फ्रॉम अस. एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा नहीं होता था. एप्टीट्यूड टेस्ट जब आप कोई कंपनी में पर्सनल रेफरेंसेज आते हो तभी नहीं होता. एप्टीट्यूड टेस्ट तभी ही होता है जब कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन कैंपस आ रही है, या तो बल्क में हायरिंग कर रही है. अदरवाइज एप्टीट्यूड टेस्ट डोंट हैपन. So we have to be very careful about the know-how and the giveaway of different situations with regards to interview preparation. Let's start with the first one. So as I said you just few minutes back, ensure that your tagline opening statement is different. Your vision statement has to be somewhere in lines with the company's vision statement. I repeat what I just said. मैंने थोड़े टाइम पहले आपको फर्स्ट स्लाइड पे बोला था कि मैं जो भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं वो कंपनी के बारे में सब पढ़ूंगा. भाई उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, everything I'll read about that particular company. Same thing I am telling you over here. जब मैं कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मेरा सीवी गया है,
तो कंपनी को मेरा विजन और उसका विजन सेम टू सेम लगना चाहिए. अगर मेरा और कंपनी का विजन सेम है, इट मीन्स दैट समवेयर वी बोथ आर अलाइंड ऑन सेम लाइन्स, we both want same thing to happen, and there is resonance, there is the frequency match whereby they can plan to kind of target us and offer us a chance. नेक्स्ट, बी क्लियर अबाउट योर स्ट्रेंथ. अब स्ट्रेंथ सिर्फ डालने के लिए मत डालना. आई रिपीट माई वर्ड, you have to be very careful that whenever you are putting across your strengths in your curriculum vitae, it should not be for the sake of just putting across strength in the curriculum vitae. We have to be very much careful about what is it which we are putting as a strength. Most importantly, always have a supporting real life example जो आपके साथ हुआ हो. जैसे मैं बोलता हूँ स्ट्रेंथ में able to work under pressure, then I should have 2 to 3 examples where in the past I have worked under pressure, and that work doesn't mean that I have only completed that assignment. That means that I have excelled into that particular assignment. करने के लिए नहीं किया, but मैंने उसको perfectly किया. That is what you mean by strength at that particular phase. Be careful about your achievements. This is must to be put across. Don't put any achievement which never ever belonged to you. होता है बहुत बार, हम लोग सीवी में मेंशन करने के लिए बहुत कुछ मेंशन कर देते हैं टू मेक इट इम्प्रेसिव, सो दैट हम फर्स्ट राउंड के बाद एटलीस्ट पर्सनल इंटरव्यू तक या ग्रुप डिस्कशन तक जा सके. बट अंडरस्टैंड दिस, एनीथिंग बीइंग फॉल्सली पुट अक्रॉस इन आर सीवी will impact us in the immediate long run. जैसे ही आप ज्वाइन हो जाओगे and when they will realize that whatever you had put across in your CV had this wrong information, probably you won't be able to perform on those particular tasks. अगर मैं mention करता हूँ that I know softwares like Tableau, Power BI and all, in that particular case अगर मैं Tableau, Power BI मुझे आता नहीं है और मैं mention कर रहा हूँ, कंपनी को तो मैंने बोला है मुझे आता है, 4 चीज बेसिक कहीं से रट्टा मार के चले जाऊंगा. पर जब मैं ऑन फील्ड ऑन company's assignment काम करूंगा and I don't know those softwares, I will not be able to perform. So be careful about what you put across in your achievements as well. Very important is to know what is supposed to be a part of your CV and what is not supposed to be a part of your CV. I repeat, वो चीज गलती से भी मत डालना जो कहीं ना कहीं हमको अपने टारगेट से दूर लेके जाती है. लाइक लेट्स से, now this is something which happens to a major extent in a very good number of CVs. तेरे मेरे बहुत सारे लोगों के सीवीज में होता ही. हम लोग ना अपने सीवी में मेंशन करते हैं इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटरेस्टेड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरेस्टेड इन बिजनेस डेवलपमेंट. व्हाट हैपेंस इन दिस एंटायर प्रोसेस, आपने 3 चीजें मेंशन कर दी. मुझे बिजनेस डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट है, आर&डी में भी इंटरेस्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट है. एज अ इंटरव्यूअर मुझे ये समझ में आ गया, बॉस यू डोंट हैव क्लैरिटी व्हाट इज इट व्हिच यू वांट टू डू. आपको पता है कि जॉब रोल या ओपनिंग बिजनेस डेवलपमेंट की है, तो आप आपके सीवी में स्पेसिफिकली बिजनेस डेवलपमेंट ही मेंशन करो. डोंट मेंशन अदर 2 streams. I'll tell you practically, I've experienced this. My first interviewing company, the first interview, which probably second or third interview which I gave, there I had a very clear cut question that you want to do this or you want to do this. I said I'm interested in both the streams equally. Then the next question was, let's say if you're given a better opportunity at some XYZ company in another stream compared to what you are here for interviewing, I said I'll go the other side. So to be honest, आप जब भी कोई भी इंटरव्यू के लिए जाओ, यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट इज इट विच यू वांट टू डू. अगर आपके इंटरेस्ट का स्ट्रीम नहीं है, अगर आपके इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है, डोंट गो अहेड. अगर आपके इंटरेस्ट का है या जब आप स्पेसिफिक ओपनिंग के लिए जा रहे हो, जस्ट मेंशन दैट इन योर करिकुलम विटे एंड नथिंग एल्स. Be clear about the words with regards to area of interest. There are a lot of MNCs, not only Indian companies, which while hiring will probably not tell you which stream they are allocating you. They'll just hire you, and afterwards getting in the company, तब कंपनी में जो भी पोजीशन के लिए जो भी वैकेंसी होगी, they'll put you across in that. I don't want that to happen with you. Try and gauge as much clarity as possible in the initial phase itself कि what are the job openings they are going to allocate us onto. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ा है MS इन मेडिसिनल केमिस्ट्री और MS इन फार्मास्यूटिक्स और मैं जॉब कर रहा हूँ इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, अनलेस एंड अंटिल आई एम इंटरेस्टेड. इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो अहेड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यू कॉमनली फेस करेगा, दैट इज आफ्टर पुटिंग अक्रॉस योर सीवी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो ये क्वेश्चन में आने के पहले मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सीवी का आउटलाइन देना चाहता हूँ. ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल. I suppose you are able to see 2
CV is right on the page. Can I get a quick confirmation in? गौरी, हंसवाल, सूर्यवंशी, प्रेम, रोहित, दो सीवी दिख रहे हैं एक पेज पे फेनिल, दोनों के दोनों सिर्फ दो अलग फॉर्मेट है. इन्फॉर्मेशन शायद इसमें इतनी है जो तू मैं सब लोग कन्वे करना चाहते हैं. नो लिमिटेशन विद रिगार्ड्स टू दैट. So we have to be very much clear about what is it which is supposed to be a part of the entire CV and what is it which can be kept superficial. बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आप सारे की सारे इन्फॉर्मेशन सीवी में दे देते हो तो कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं ना. व्हाट विल आई आस्क? एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल, जानबूझ के ना सीवी में थोड़े पॉइंट्स सुपरफिशियल रखने के. आपको इंटरव्यू के टाइम डिस्कशन के लिए भी कुछ तो क्वेश्चंस चाहिए. अच्छा, इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें बहुत सारे डिफरेंसेस करते हैं. If you are the first one who is going to go for the interviewer has a lot of energy, a lot of questions you can expect across. But if you are someone who can, I'll try to zoom. Just a minute. I doubt whether I'll be able to. Yeah, can you? Don't worry, मैं चाहिए तो ये PPT भी पास कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Is it visible now to a better extent? Just a quick confirmation. Krishna, Aarti, Nagesh, Vaishnavi, Rohit. Yes. Hello. थैंक्स ऋषिकेश. सो एक एक पार्ट एक्सपीरियंस, पहले पर्सनल इन्फो. बहुत सारे लोग राइट पे प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग लेफ्ट पे प्रेफर करते हैं. एजुकेशन वाइज, सर्टिफिकेट्स, इंटरेस्ट, सॉफ्टवेयर, कितना कंसाइज वे में सब कुछ जो चाहिए था वो वहाँ पे मेंशन कर दिए. रादर देन पुटिंग द वर्ड सॉफ्टवेयर के नीचे एक्सीलेंट इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, वेरी गुड इन विंडोज सर्वर, द काइंड ऑफ डिपिक्टिंग इट हैज मेड अ डिफरेंस. ये थोड़ा सीवी को मेरा अलग करेगा, बट ये तब के हाथ में आता है. Understand, when you apply through job portals like LinkedIn, when you apply through job portals like Naukri.com and all, trust me, there are softwares which will eliminate your CV. I repeat, there are softwares जो आपके CV को उड़ा देता है. वो कुछ specific CV ही shortlist करता है. अब वो specific CVs जब वो shortlist करता है ना, वो specific CV वो shortlist करता है on the basis of some keywords. आप कोई भी CV देख लो, कहीं का भी कोई भी कंपनी का जॉब ओपनिंग देख लो. टाइम रहा तो मैं एंड में आपको लिंक्डइन पे लेके जाऊंगा, जॉब ओपनिंग्स में डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा. उनके जॉब ओपनिंग्स में कुछ वर्ड्स स्पेसिफिकली लिखे रहते हैं, ये वर्ड्स. अगर वो सेम वर्ड्स मेरे सीवी में आते, माय सीवी गेट्स शॉर्टलिस्टेड. अंडरस्टैंड, इट्स अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स. इट्स नॉट अ ह्यूमन सिस्टम इन्वॉल्वड ओवर देयर. हो सकता है आपके पास वो सारे स्किल सेट है जो वो जॉब ओपनिंग के लिए चाहिए, बट अगर वो की वर्ड्स आपके सीवी में नहीं है, it's gone. Your CV won't be shortlisted. Sir, do you mean to say that every time I'm applying to a job opening at Dr. Reddy's or Novartis or Pfizer, मेरे को उसके keywords डाल के हर बार एक नया CV बनाना पड़ेगा? Somewhere closely, yes. It cannot be a universal thing that एक बार बना दिया वो सब जगह चलेगा. हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट के ओपनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, irrespective of the company, a lot of companies will have a clear cut कॉमन इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर बिजनेस डेवलपमेंट. तो वो आपके सीवी में आप ले लो. फिर वो डॉक्टर रेड्डीज का ओपनिंग हो, फाइजर का हो, कोई भी कंपनी का हो, दैट डजंट मैटर. वो वर्ड्स के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स बन के अपने सीवी में आने चाहिए. Time rहा तो maybe we'll have a different session someday on resume making as well. I don't know whether the feedback form has a question, but somewhere if you want us to repeat any of the session or if you want any of the discussions, let's say a separate session on resume preparation or group discussion or personal interview, which is a far more elaborative topic, you can communicate to your college faculty or you can communicate to the entire APTI team. Because trust me, the sessions can go as long as 10 hours if you have to talk in detail about each and every phase. So I would request you that it's better that you talk across with different people with regards to different areas so that we can get a better idea onto the things. Yes, so that's one situation where we probably might be left across with few topics to be discussed later on. So basically, this is the format which, to be honest, I use it. This is the format which, to a good extent, NIPER and few colleges across use it. But as I told you, आप अगर 3 सीवी बनाते हो, अच्छा सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम सब लोग सीवी में करते हैं, तुम ही नहीं बहुत सारे लोग, मैं भी करता था स्टार्टिंग में. हम लोग जब भी खुद का सीवी बनाते हैं, आई होप देयर माइट बी फ्यू एमकॉम एंड पीएचडी स्टूडेंट्स ओवर हियर, हम सीवी बनाने के बाद अपना नाम लिखते हैं, लेट्स से धर्मेश मेहता अंडरस्कोर बिजनेस डेवलपमेंट. तो जब भी बिजनेस डेवलपमेंट का ओपनिंग आएगा तब मैं वहां भेज देता हूँ बीडी वाला, धर्मेश मेहता अंडरस्कोर R&D. अरे तुम अपने सीवी का नाम सिर्फ धर्मेश मेहता रख के ही फॉरवर्ड करो. आई कैन नॉट नेम इट विद डिफरेंट स्ट्रीम्स. मेरे रेफरेंस के लिए चाहिए, आई कैन डू दैट, बट व्हेन यू आर फॉरवर्डिंग इट टू HR,
You should not mention your CV with such names. It doesn't make sense anyway far. So you have to be very careful. Don't keep the simple word only resume. हमारे जैसे resume के नाम से कितने सारे लोग CV भेजेंगे. क्या गारंटी है कि वो पहले मेरा ओपन करेगा? लिखना है तो ऐसे लिख दे, रमेश मेहता अंडरस्कोर resume. That's it. Don't confuse it. Keep it as simple as possible for the opposite person for your evaluation. Personal data, Nikita, to a great extent is not required, to a great extent. But then there are few things which would be always required to be a part of your curriculum vitae. I won't be able to talk about few applications जो आपका personal data एक अलग ही level तक ले रहे हैं आज के डेट में. I won't be able to name that app platform, but I suppose वो सिर्फ 2-3 साल पहले ही आया during COVID. And if you have to register yourself as someone who wants to hire, you need to upload your every document. Gumasta license, this, that, your MSME certificate, everything needs to be uploaded in order to confirm that you are the right employer. एक साइड वो अच्छा है वेरिफिकेशन कर रहा है, बट ऑन द अदर साइड वो पूरा डेटा ले रहा है. एट द सेम टाइम इफ आई एम एन student or a person who wants to apply for interview via that particular platform, even I need to offer that much amount of information. मेरा आधार कार्ड अपलोड करो, पैन कार्ड अपलोड करो, which I think should not be given across to third party platforms unless and until you are being hired. जब आप कंपनीज की बात करते हो, ये सारे डेटा वो कंपनीज में हायर होने के बाद शेयर करना होगा. So why am I supposed to share it prior? So yes, you have to be careful about what extent you share across your data on, because I hope you all are very clear that data is the next fuel. So need to be careful about that. ऑब्वियसली रमेश वेरी क्लियरली ऑन पॉइंट. हॉबीज मेंशन करने से सीवी में फर्क पड़ता है, बट वो कौन से पॉइंट पे वो नेक्स्ट फेज में बताता हूँ. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर. कैन वी गो फर्दर फ्रेंड्स? जूम आउट नहीं हो रहा है, हो गया. लेट्स गो. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद दोस कॉमन क्वेश्चन जो तुम हर एक इंटरव्यू में फेस करने वाले. तुम आर&डी के इंटरव्यू के लिए जाओ, बिजनेस डेवलपमेंट के इंटरव्यू के लिए जाओ, कोई भी एरिया के इंटरव्यू के लिए जाओ, कोई भी टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो, वो सब तो रहेंगे ही, बट साथ में ये सारे क्वेश्चंस भी 100% श्योर रहेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन विच यू माइट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गुड नंबर ऑफ एरिया इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो जब भी आपको कोई बोलता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप खुद को इंट्रोड्यूस करो, सो व्हाट इज इट विच यू विल बी कॉमनली पुटिंग अक्रॉस? आप क्या बोलोगे? मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया. कम ऑन, वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, राइट? यहाँ पे माई सेल्फ पे डिस्कशन नहीं चल रहा. यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है विथ रिगार्ड्स टू इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ. You have to introduce yourself to a level such that it should be so interesting to the opposite person that somewhere closely वो introduce yourself में उसको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाए. मैंने आपको स्टार्ट पे ही बोला था, यू आर द वन हु इज गोइंग टू ड्राइव द इंटरव्यू. तुम्हारे पहले सवाल का जवाब उसका दूसरा सवाल होने वाला है. विल डू सम लाइव थिंग्स एज ऑफ नाउ इमीडिएटली ओवर हियर ओनली. जस्ट अ क्विक चेक, व्हाट डू यू थिंक शुड बी अ पार्ट ऑफ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कभी भी कोई आपको इंट्रोड्यूस करने बोले तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? चलो कम ऑन क्विक. मैं आपका नाम ये सब नहीं पूछ रहा, बट व्हाट इज इट जो आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में बोलना चाहोगे? quick some quick examples. Can we have some quick examples in French? अन्नू, कृष्णा, प्रेम, रमेश, निकिता, ऋषिकेश. मैं अपना नाम बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा मैंने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, विच कंपनी आई हैव वर्कड इन द पास्ट, और इफ आई एम अ फ्रेशर. ये चार चीज़ें प्रोबेबली हम सब बताने का ट्राई करते हैं. ऑन पॉइंट आतिका हैज अ पॉइंट. शी सेज माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. नाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. गुड वन नियति. क्वालिफिकेशन, माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पोजीशन क्या रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. गुड पॉइंट इन आतिका. एनीथिंग एल्स? एजुकेशन, राइट दीप्ति? कुछ और स्किल्स? ऑलराइट. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, गुड वन अनुराग, आपका आंसर कितना बड़ा हो सकता है? 2 लाइन का, 5 लाइन का, 10 लाइन का, 20 लाइन का? 1 मिनट में बोलोगे, 2 मिनट में बोलोगे, 5 मिनट में बोलोगे कि 30 सेकेंड में बोलोगे? कम ऑन क्विक. गुड वन. इंटर्नशिप्स एंड ऑल, हाउ अबाउट द ड्यूरेशन? सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं आपको कितने टाइम सुनना चाहता हूँ, कितना टाइम मैं आपको सुन सकता हूँ, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है. ऑन पॉइंट गौरी, दैट आई विल मेंशन सम यूनिक स्किल्स एंड इंटरेस्ट. गुड वन दीप्ति एंड स्नेहा. आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में जो भी बोलोगे वो 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए. 1.5 itself is a good amount of time. You have to be very much precise. इतना ही बोलना है. फिर वो फटाफट 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 पैनिक होके नहीं बोलना है. You have to be clear about your words. Now someone mentioned over here in the chat box that I'll talk about strength and weakness. I have one quick question. Is your biggest strength your biggest weakness? I repeat my question.
Is your biggest strength your biggest weakness? Yes or no? हाँ या ना? मैं तो मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन सकती है। चेक कर लो। You identify that if this is your biggest strength, let's say some XYZ thing, or some XYZ person, or some XYZ relation, or some XYZ friendly coordination, वही अपनी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन जाती है। Now that's something on a personal note. Now that same thing can be extrapolated to something on a professional note. On same grounds, अगर मैं बोलता हूँ that Tableau is my biggest strength when I'm applying for business analyst job role. I hope you all are aware Naipur Mohali से Novartis hire करता है. The field is growing in itself to a very great extent. Anyways, we'll talk about it in some later phases or different session. So when we talk about Tableau and business analyst, when I say this is my skill set and I say this is my strength, so मुझे Tableau के सिवा और कुछ नहीं आता है क्या? I don't know basic Excel or I don't know Power BI or I'm not willing to learn that particular phase. वो सारे different indirectly related questions start हो जाते हैं. My advice to you will be introduce yourself should be as short as possible. It should not be of 15 seconds के उसने तुमको question pass किया, तुमने आपका नाम बोला, my name is Dharmesh Mehta and it's done. No, that's not the case. You have to be a bit precise. Like, I'll just give you a brief introduction. First of all, a big thanks for allowing me for this interviewing session. And to take it further with regards to my basic introduction, I am Dharmesh Mehta. I've completed my B.Pharm from this college. I've completed my MS from Naipur, Hyderabad. I'm someone who firmly believes that any and everything is possible depending upon the kind of strategy you apply to a particular situation, whereby you can turn impossible things into possible. अभी बहुत हाई फाई स्टेटमेंट हो गया, impossible into possible, strategy and all those things. Now, when I end up with a question like answer like this in my introduction, next thing probably what Mayur, Rushikesh, Meera or Akshay might ask me is impossible into possible. ऐसा आपने क्या किया है? कब भी किया है? कैसे किया है? You mentioned about strategy and all. What strategy did you apply at that particular phase? अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैंने डिसाइड किया. अगर मैं उसमें कुछ एंड में ऐसा बोल देता, आई एम समवन हु इज वेरी कोर हार्डकोर इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आएंगे. तुमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या पसंद है? तुम बोलोगे ओरल सॉलिड्स, टॉपिकल, इंजेक्टेबल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तुमने ओरल सॉलिड्स में किस पे काम किया? आप बोलोगे मैंने टैबलेट पे काम किया, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट. तो बोलेंगे सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट पे और क्या क्या दूसरे कॉम्बिनेशन के पॉलीमर्स यूज हो सकते हैं. I hope you are getting it. You are the one who are going to decide what is going to be the next phase of the questions which you are going to face. Unless and until being asked in elaboration, never ever answer in detail. I repeat, जब तक आपसे कुछ डिटेल में पूछा नहीं गया है, तब तक आप डिटेल में कुछ बताओ भी मत. Why to get into details when we are not being asked in details? I hope you get it. Everything clear till here? Can we go further? एक briefly अगर बताना है तो your name, greetings, name, qualification. If you want to mention some specific achievement, one or two lines with regards to your skills and attitude. I'm someone whose vision and future goals are aligned with the company's vision and future goals, which is with regards to गुड हेल्थ कांट वेट. अभी डॉक्टर रेड्डीज का टैगलाइन है गुड हेल्थ कांट वेट. तो आप ऐसे बोल दो, मेरा विजन बोलता है दैट गुड हेल्थ शुड नॉट बी अ कॉम्प्रोमाइज फॉर एनीवन एंड एवरीवन. Medication should be affordable to everyone depending upon the tagline of the company. Also you can play around. जैसे सिप्ला है, सिप्ला का टैगलाइन इज कैरिंग फॉर लाइफ. आप खेलो वो वर्ड के आजू बाजू खेलो. सो बी केयरफुल विथ व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग. अगर वो कंपनी के इनलाइंस है, इट इज अ एड ऑन फॉर यू, बट एंश्योर दैट यू डोंट kind of jumble it across. Be thankful at the end. These are some just small thing. Be careful, don't rush over here. Fast 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 my name is this, I do this. नहीं, it has to be very clear, it has to be very simple. कहीं ना कहीं तुम्हारे वर्ड्स में ही, तुम्हारे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के आंसर में ही वो खुद का नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा है. और वो क्वेश्चन तुम डिसाइड करोगे कि वो किस पे बनाए और क्या बनाए. वो तुम्हारे हाथ में, ना ही उसके हाथ में. Clear till you? Can we go to the next question? Next question is my very favorite question. How long you are planning to work with our organization? बहुत सारी कंपनियां ये पूछती है, पूछा भी था. And whatever we are discussing today, trust me, it's all after my personal experiences, which I have faced across, which I have to be honest, probably failed across as well. To be honest, I didn't remember I attended any such interview preparation and training sessions. या कोई था ही नहीं हमारे टाइम back in 2017-18. 4 साल ही बड़ा हो, ज़्यादा नहीं. सो डोंट हाइपरकेट इट. एनीवेज, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा आप कितने साल हमारे कंपनी के साथ काम करना चाहते हो, आप क्या बोलोगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल? You would answer it in some terms of number of years. Mayur, Aarti, Gauri, Trishul, Sneha.
कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स बोलेगा प्रसाद, if you are planning to say any number, that will be the biggest crime which we are doing for ourselves. गलती से भी कोई नंबर मत बोलना. Never ever say any specific number with regards to it. सर नंबर नहीं बोलना है तो आंसर कैसे करना है? समवेयर आई हैव टू कन्वे माय आंसर, समवेयर आई हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई वांट टू अचीव ऑन द अदर साइड ऑफ द एंटायर पिक्चर. तो नंबर तो नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? व्हाट इज इट विच शुड बी माय आंसर? Want to achieve a better position, something else Atika, somewhere close to what it should be, anything else? और क्या बोल सकते हैं? What else can we add across? Come on quick, let's give it a try. चलो मैं कुछ फ्रेम करने का ट्राई करता हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंटली द बिगेस्ट मिस्टेक विच फ्रेशर्स मेक, फ्रेशर्स एक्सपीरियंस लोगों को तो पता होता है ये जवाब नहीं देना. whenever there is a question on how long you should be or how long are you planning to work with our organization, never ever answer it in terms of number of years. 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल कभी भी मत बोलना. ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्यू सिंपल थिंग्स. लेट्स से अगर आप अभी कंपनी हो तो कंपनी भी कुछ ना कुछ बेसिक प्रोटोकॉल सोच के आती है. Many times you might have experienced with your colleagues that होता है कि जो कम टैलेंटेड बंदा होता है वो शायद से हायर हो जाता है और जो ज़्यादा टैलेंटेड होता है वो इमिजिएटली हायर नहीं होता. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. इफ यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट शायद तुम बी फार्म के बाद एम फार्म का सोच रहे हो या एम एस का सोच रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का सोच रहे हो. अगर आपका एम एस हो चुका है, यू आर टैलेंटेड, समवेयर यू आर गोइंग टू प्लान अगेन विथ रिगार्ड्स टू योर पीएचडी. तो वो भी एक अलग सिचुएशन जो दिमाग में चलती रहती है कि बंदा पीएचडी के प्रिपरेशन के लिए जाने वाला. नाउ चेक द अदर वे राउंड. इफ आई एम द हायरिंग कंपनी, मैं आपको हायर करना चाहता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं कोई भी बंदे को हायर करूंगा तो पहले मुझे उसको 6 महीने 10 महीने ट्रेन करना. तो पहले 6-8 महीने कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट यू टू ट्रेन यू टू गेट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन. एम आई करेक्ट? अब सोचो मैंने आपको ट्रेन करने में 6 महीने लगा दिए, 8 महीने लगा दिए एंड आपने और 4 महीने काम किया एंड देन यू वेंट हेड फॉर पीएचडी. मेरा इन्वेस्टमेंट एज अ कंपनी ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड्स, आई एम बैक टू जीरो. एम आई करेक्ट फ्रेंड्स? यस और नो? मैं वापस वहीं का वहीं आ गया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. मेरा तो ट्रेंड कैंडिडेट चला गया. अब ऐसे केस में कंपनी हमेशा स्टेबिलिटी देखने का ट्राई करता है. It will happen to a very great number of times that if you are from a company based in Mumbai, let's say if you are applying for a company based in Mumbai, and if you are a localite of Mumbai, they might prefer that person over a localite of Hyderabad. It's not your mistake. Understand? The only reason is they feel that ये मुंबई का तो 5-10 साल तक भी किधर नहीं जाएगा. हैदराबाद वाला है, हैदराबाद में तो बहुत सारे फार्मा कंपनीज है, ये आज यहाँ रहेगा, 2-3 साल बाद हैदराबाद चला जाएगा. So it depends on the interviewer capacity, constraints, HR's methodology, mentality, and all those phase. But be clear about this particular thing, especially post-COVID. The common question is, are you ready to relocate? You should always have a yes to that. होना है नहीं होना है, there are different phases to it, which we can always discuss about and think across. But yes, you should always have a yes to that. And when you are talking about how long you're planning to work with our organization, नंबर तो नहीं बोलना, बट यू कैन ऑलवेज से आई एम रेडी टू वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन एज लॉन्ग एज आई गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न. आई रिपीट माई वर्ड, लर्न. लर्न, LEARN. हम सीखने की बात कर. जब तक मुझे नया सीखने मिल रहा है एंड टिल द टाइम आई एम गेटिंग एडिक्वेट ग्रोथ. अगर ग्रोथ मिलेगा तो ही कोई रहेगा. सिर्फ लर्निंग से ही होता रहता, then there was no requirement of increments, appraisals and all, right? So you have to justify it with regards to the clear statement that till the time I am learning and till the time I am growing along with the growth of the company, there is no second thought of moving over to any other company. अभी इससे क्या होता है, उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये बंदा यहीं रहने वाला है, वो लर्न भी करना चाहता है, ग्रो भी करना चाहता है. तो दैट इज वन स्पेसिफिक थिंग विच यू शुड बी क्लियर अबाउट. ना ही कोई शॉर्ट पीरियड बोलो, ना ही कोई 10-15 साल बोलो. ईयर्स गलती से भी मत बोलना. जो भी बोलना वो कंपनी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए. जो व्हाट आई सेड, टिल द टाइम आई एम ग्रोइंग विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. तो कंपनी ग्रो हो रही है तो साथ में उसके एम्प्लॉयज होंगे. शो दैट यू आर हैविंग दैट पॉजिटिव इनपुट विद रिगार्ड्स टू द कंपनी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कभी भी झूठ मत बोलना, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू via some personal reference. This was something which I wanted to say initially. अगर कोई XYZ person आपको रेफर करता है based on his contacts, based on his networking, never ever go wrong. अगर आपका प्लान है कि आपको आगे PhD करना है, आप पहले से बोल के रखो. आप जो भी रेफरल के थ्रू इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, you keep them informed about the same thing.
Finally, it's always better to have a CV in the it's always better to have a photo in the CV. Not only that, if you can have LinkedIn barcodes, even that's much more better. I'll come to that phase as well. I hope we are clear till here. कुछ नया जानने मिल रहा है? Yes or no? I hope you are not saturated. It's been an hour, but I hope I'm able to entertain you all to the best possible. Yes. अब next question ना तुम आंसर करोगे, मैं नहीं करूँगा. Now it's your turn. Here we go. Back again. How much remuneration do you expect? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर. पैकेज, सैलरी, इसके बिना आप बात करके मतलब नहीं है. सो आई हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज इट व्हिच इज गोइंग टू बी ऑफरिंग फॉर मी. कितना ऑफर करोगे? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट एज अ पैकेज? कम ऑन. Now understand this few simple things. When you are going for a campus recruitment, most of the time this figure is fixed. Am I correct? हमेशा ये फिगर फिक्स्ड होता है. बट अगर आप कोई पर्सनल रेफरेंस से जा रहे हो, even though it's a freshers interview, get that straight. Even though if it's a freshers interview, and if you're going by some personal reference, you have a bar or a scope to negotiate. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको मना कर दो कि भाई आप जो ऑफर कर रहे हो, आई एम नॉट accepting that, I'm not okay with that offer. I'm not saying you that. What I mean to say basically is you be clear about what is your expectation. But अगर तुमको ये क्वेश्चन पूछा कि भाई तू कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, what do you think should be the answer? Are you planning to tell them any figure? 5 lakh per annum, 10 lakhs per annum, 20 lakhs per annum. Do you think you should say any figure like this? I don't think so. फिर तो ऐसा हो जाएगा कि आज मैं इसको अगर 8 लाख दे दूं, कल इसको अगर और कोई कंपनी मिल गई, लेट्स से यू आर एन एक्सेप्शनल परफॉर्मर, आज किसी ने आपको 8 लाख दे दिया तो कल कोई 15 लाख देगा तो तुम उसके पास चले जाओगे. तुम एक्सेप्शनल हो, तुम्हारे पास नॉलेज है, यू हैव समथिंग विच इज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, and there is no denial on that. But the thing is that moment they smell it that this person is running for money, which is actually the case with 90% of the candidates in and around the market, इसमें कुछ गलत नहीं है. At the end of the day, everyone somewhere closely wants what they want. It's a basic necessity. But how you put across, you remember the first slide where I was constantly stressing across one thing, which was how you put across what you want, how you communicate your requirements. That's going to be the key. That's something which we need to understand. So when it comes to how much remuneration do you expect, first and foremost, don't tell them any figure. 5 lakhs per annum, 10 lakhs per annum, ऐसा कभी भी मत बोलना. Starting में मत बोलना. This should not be your first line of answer. Initially, you can tell them that as per industry standards, as per industry policies, whatever is being offered as per the company norms, because every company will have some or the other norms. You go to Novartis का एक फिक्स बार होता है कि वो जब फ्रेशर्स को लेता है तो 5.5 या 6 लाख से ही स्टार्ट होता है. You go to some other company, they might have some lower bar for freshers and some higher bar at every designation. एमएनसीज में क्या डेजिग्नेशन बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि ये डेजिग्नेशन पे हाईएस्ट पैकेज इतना जाएगा, मैनेजर को इतना, जनरल मैनेजर को इतना, वाइस प्रेसिडेंट को इतना, प्रेसिडेंट को इतना. तो ये सब कुछ कॉमन नॉर्म्स होते हैं जो कंपनी टू कंपनी शायद टू अ गुड एक्सटेंट थोड़ा प्लस माइनस होता है, बट इट्स नॉट दैट ग्रेटली डिफरेंट. तो एज पर कंपनी नॉर्म्स यू कैन ऑफर, ऐसा बोल दिया सपोज आपने, वो एक फिगर बोलता है. सो दिस इज समथिंग टू बी ऑनेस्ट व्हिच हैपेंड बैक इन February 2018, probably my second interview as far as I remember. So they quoted a figure and I said this is not okay, I am expecting this much. You know what was the next question? They asked me, why do you feel that you deserve this much? Let's say उन्होंने मुझे ऑफर किया 2.5 लाख, just a rough example, 2.5 lakhs per annum. I said then I'm expecting somewhere close to 5 lakhs per annum. So their question was, why do you think that you deserve 5 lakhs per annum? So you need an answer for this parallel. You can tell them something like this. I think that since I'm a fresher, I don't deserve much on the higher side since the company is supposed to invest a lot into me, train me for the same. But at the same time, coming with an internship background, with industrial experience with my internship project, I have the required know-how in order to get through the required things so that I can ensure that I deliver my best with all the information which I have at my end. That's how you can end it up. तो आपने आपका रिक्वायरमेंट भी पुट कर दिया. एट द सेम टाइम यू कन्वेट देम दैट दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग द लीस्ट. एंड अगर फिट होता है, इफ दे आर रेडी टू समवेयर क्लोज इट इन बिटवीन, और इफ वी आर रेडी टू क्लोज इट समवेयर इन बिटवीन, देन वी कैन वर्क इट आउट. आई होप यू आर गेटिंग इट. गलती से भी कोई फिगर मत बोलना जब तक वो कोई फिगर नहीं बोलते. अगर वो अपफ्रंट आपको कोई फिगर बोलते फिर आप फिगर से बात करना चालू करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्होंने फिगर से टॉक इनिशिएट किया है, आपने नहीं किया. Clear till here? This is just a rough sample answer for you if you wish to read it across.
But understand this answer will always be subjective from a company to company where you're going for interview. Like let's say अभी Novartis है, Novartis नाइपर मोहाली आके गई, नाइपर मोहाली से हायर करके गया, एंड 1-2 years डाउन द लाइन आप नोवार्टिस में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको पता है नोवार्टिस फ्रेशर को ही 5.5-6 लाख देता है, अब आप 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हो, तो यू नो समवेयर यू कैन आस्क 8 lakhs to 9 lakhs per annum minimum. And I'll talk about few real life case studies which has happened in the past. We'll talk about that very soon. You will be amazed at those figures, trust me. Good one, Trishul, on point. Everything clear till here? I suppose we have answered 3 major questions. Yeah, that's सबसे important question. Do you have any question from your side? Most of the time, 99% of the time, लोगों के पास कोई question नहीं होता है आपके पास. Let's say if you are here for an interview, and if I ask you, do you have any question from your side? So, do you have anything to ask me? Let's say I'm your interview. Come on, let's have some quick questions from your end. आप कुछ पूछना चाहते हो? कुछ ऐसा है जो आप हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हो? 99% of the time, people will end up saying nothing. फिर 90% ऑफ द टाइम्स जो फ्रेशर्स होते हैं, जो गलती करते हैं, आई वुड से यस इट्स अ रॉन्ग थिंग. पीपल स्टार्ट आस्किंग सैलरी. वो सैलरी पूछना चालू कर देते हैं. In that particular case is the biggest mistake which I feel is being done across, because आप उसको clearly बता दे रहे हो that you are there only for money. तो अगर आपने इंटरव्यू के टाइम बोला है आई एम हियर टू लर्न, आई एम हियर टू लर्न एंड ग्रो, वो सब बकवास था, उसको वो सब समझ में आ गया. So you have to be very clear that whatever questions you are keeping for your side, they have to be in line with the company's plan. Don't ask them salary. Don't discuss something which was already a part of pre-placement talk. आपके पास कितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये सब मत पूछना, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में सब बता दिया है कंपनी के बारे में. और इज दे एटलीस्ट एक्सपेक्ट यू टू रीड बिफोर यू कम डाउन फॉर द इंटरव्यू. Anshuman has a good question that I would like to know the culture of the company. But to be honest, it should not be an apt question because the next thing what they might just end up saying, Anshuman, is what if our company's work culture is toxic? You don't wish to join it? Or let's say if the work culture is good, but it might just turn toxic due to some new hirings. You might leave the company. तो कुछ भी ऐसा आंसर मत करो जिससे उन लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन कर दे जो हमको बैकफायर करे. हाँ, द थर्ड वन इज ऑलवेज ऑन द बेटर साइड. कंपनी का फ्यूचर पॉलिसी क्या टारगेटेड है, कंपनी कैसे खुद का ग्रोथ टारगेट कर रही है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप कंपनी के ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो. यू आर विलिंग टू ग्रो विद द कंपनीज ग्रोथ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वही बोला था, राइट? वी सेड दैट माई ग्रोथ, कंपनीज ग्रोथ अलॉन्ग विद माई ग्रोथ, दैट शुड बी समथिंग लाइक वी शुड बी टेकिंग अक्रॉस. Work life balance is something which you have to take exceptionally, that yes, this is something which will be kept across. You can indirectly ask about work hours and all, which would indirectly give you an idea for the same. But उनको कुछ भी ऐसा मत पूछो जो तुमको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दूसरे सोर्स से पता चल सके. पूछने के लिए नहीं पूछना, इट हैज टू बी समथिंग व्हिच यू एक्चुअली वांट टू नो. सो बी क्लियर अबाउट दैट. अगेन बी क्लियर अबाउट हु इज द ऑपोजिट पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग यू. वो हेड एचआर है, जूनियर एचआर है जो सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर रहा है, कौन है वो? क्योंकि बेस्ड ऑन हिज विजन, बेस्ड ऑन हिज थॉट प्रोसेस, थिंग्स वुड चेंज अराउंड. ट्राई टू नो द इंटरव्यूअर प्रायर. इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ नेटवर्क, अगर आपको पहले ही पता चल जाता है कि भाई मेरे को इंटरव्यू कौन करने वाला है, वो क्या जानता है, वो क्या नहीं जानता है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा चेक कर लेते हो, तो आपको पर्सन की आइडियोलॉजी समझ में आ जाती, विच हेल्प्स यू टू हैव अ ग्रेट डिस्कशन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम. ऑलराइट, वो थे कुछ कॉमन क्वेश्चन जो शायद हर एक इंटरव्यू में रहेंगे. ये कुछ एक्स्ट्रा कॉमन क्वेश्चन है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट व्हिच वी हैव टू गॉट टू से ओवर हियर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स? 90% शायद हाँ बोल देंगे, है ना? What have you got to say? प्रसाद, आकांक्षा, अंशुमन, अर्षदा, अक्षता, एक्स्ट्रा आवर्स चल जाएगा सर, है ना? Everyone would agree on to this. कोई मना करेगा ही नहीं. Understand, whenever you agree on to the fact that I'm ready to work for extra hours, somewhere the company's work culture is getting spoiled. Do you agree or you disagree? Do you agree or you disagree? Good one, Rushabh. That's a good question. सो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स्ट्रा आवर्स में जो आप आंसर देते हो, अगर आप डिनाई कर दोगे तो लगेगा कि अगर कभी कंपनी को कुछ अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, तो दिस पर्सन वोंट बी अवेलेबल. एट द सेम टाइम अगर आप हाँ बोल दोगे तो ऐसा लगेगा कि आप शायद आपके डेडिकेटेड नंबर ऑफ वर्क आवर्स में चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करने रेडी हो, या तो फिर वर्क कल्चर स्पॉइल हो जाएगा इस बंदे को अंदर लिया तो. अंडरस्टैंड, उसका हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एनालाइज करने के लिए है एज अ पर्सन.
टेक्निकल नो हाउ, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, दिस इज समथिंग जो 4 बुक पढ़ के 4 दिन लैब में 4 प्रोजेक्ट करके कुछ बेसिक पता चल सकता है। बट एज अ पर्सन किसी को भी चेंज करना इज वेरी टफ। So your mentality is something what they are assessing with different situations which they will pass across to you. So if they say, are you ready to work for extra hours? The answer is yes, but depending upon the urgency and the need of the hour. It should not happen that every day I'm working for extra hours. That's one of the most important thing. Good one on point, Anurag. Second, what expectations do you have from our organization? Wow. Come on, let's go ahead with this. क्या expect करते हो that when you join our company, what do you think is something which is going to be your expectation from the company? Different people have got different answers for this. Different people would also always put across different points of discussion across for this. Someone would say that, how about your medical policies for the employee? Do you cover it for the entire family or is it only for the spouse? Different areas, but again, अगर expectations की बात करें, अगर आपको इतना short रखना है, अगर आपका पूरा इंटरव्यू बहुत पॉजिटिव गया है, then you should always cut it at less number of expectations. एक चीज पूछ के छोड़ दो. Then that one simple thing can be, with regards to the employees achievement, how is it being recognized with our company? Like few companies have got recognitions, awards and all those phases. Monetary is totally something different जो चलते रहेगा, but जो एक motivation और boost होता है, that's always with someone tapping you that you did it something well on those grounds. एंड एक अपना फिल्मी लाइन, टेल अस दैट इज नॉट इन योर सीवी, कुछ ऐसा बताओ तो तुम्हारे सीवी में ही नहीं। तो कुछ भी ऐसा हिडन रखना मत। अगर हॉबीज के बारे में कुछ ऐसा है, कुछ प्लस माइनस है, देन यू कैन टेक कट क्रॉस। अगर तुमको ये बहुत स्मार्टली आंसर करना है तो कोई ऐसा सिचुएशन बता दो जहाँ पे बहुत पैनिक क्रिएटेड था एंड यू हैंडल्ड दैट पर्टिकुलर एक्स वाई जेड सिचुएशन टू द कोर। तुमने उसमें बैलेंस कर लिया, तुमने जुगाड़ करके वो सिचुएशन हैंडल कर लिया, यू कैन टेक अक्रॉस दैट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई डू यू थिंक वी मस्ट हायर? तुमको ही क्यों हायर करें? अब ये क्वेश्चन भी शायद तुमने बहुत बार सोचा रहेगा, सुना रहेगा। इसका आंसर क्या देना है? हमारे जैसे तो बहुत सारे, तो हमको ही क्यों हायर करना? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर फॉर दिस? व्हाई डू यू थिंक वी मस्ट हायर यू? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर वो तुमको ये पूछ रहा है, कहीं ना कहीं उसने तुमको शॉर्टलिस्ट करके रखा है। वो लोग हमेशा ये क्वेश्चन हर किसी को नहीं पूछते जो हमने शायद मूवीज या वगैरह में देखा होगा। सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, इफ दे हैव आस्क्ड यू दिस, समवेयर यू आर क्लोज टू द क्लोजिंग पार्ट ऑफ इट। I've just pinned one feedback form in the chat box. I request you all to fill in that. Another 10-15 minutes and we'll be done and we'll shoot across for your questions, for your queries. So अगर कोई पूछता है why do you think we must hire you, be careful about something which you mentioned as a part of your strength. Never ever compare it. ऐसा मत बोलना that this is only with me. ठीक है, हो सकता है वो दूसरे के पास भी हो, दैट इज। अगर आपने कुछ कंपेरेटिव बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा कि बॉस ये तो खुद को अभी से ही कंपेयर कर रहा है, सो दैट विल ऑलवेज बी अ जेलसी थिंग व्हिच माइट occur in the team's work culture which they won't prefer. Yes, you can have something like this which is quick learner, ready to learn, always ready to perform, out of the box thinking, और एक दो सिचुएशंस रख दो खुद के साथ। बहुत रेयर आपको कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, गिव अस वन रीजन नॉट टू हायर यू। इसमें क्या बोलोगे? मैं तुमको हायर क्यों ना करूं? अभी तक तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुझे तो मुझे हायर करना ही। एवरीथिंग वॉज फेवरेबल, एवरीथिंग वॉज बीइंग सेड टू बी डिस्कस्ड अक्रॉस टू टेक मी इन। तो मैं इसमें क्या पुट अक्रॉस करूँ जो एक रीजन हो कि भाई तू मुझे हायर नहीं कर सकता या मत हायर कर? क्या बोलोगे? गिव अस वन रीजन नॉट टू हायर यू। टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा हायर साइड लगेगा, बट आई वुड प्रोबेबली टेंड टू आंसर दिस इन अ वे, sir, I don't foresee any reason whereby you should not hire me because our interest, our vision, our mission, everything is on one line. अगर आप खुद ही कुछ उसको रीजन दे दोगे खुद को ना हायर करने, तो समवेयर यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। सो डोंट डू दैट। एंड विच एवर कंपनी यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर माइक्रो लैब्स फॉर इंटरव्यू, माइक्रो लैब्स का डोलो 650 सबको पता है। तो उसका जो भी कंपनी का आप जा रहे हो, मैंने बोला था आपको कंपनी का वेबसाइट स्टार्टिंग में पढ़ो। अगर उसका कोई रिसेंटली कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कोई नया डिविजन लॉन्च हुआ है, बी केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स विच विल मेक देम वेरी क्लियर that you know a lot about their company parallelly. Anything which you wish to add across over here or whatever we just discussed across till now? Any questions, any queries you have, always feel free to put it across to our email address, or you can write away, call us onto our contact numbers. You can visit our website for more details. Aptitude testing questions, I told you, is there right on the Play Store. Just download our app from the Play Store and you will get it across. Other than that, whatever queries you have, I request you all to please shoot it in the chat box. हमने सिर्फ कुछ कॉमन क्वेश्चंस ही कवर किए,
ट्रस्ट मी, इसके सिवाय भी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो शायद कोई भी इंटरव्यू का पार्ट हो सकता है. So in that particular situation where we are expecting a lot of different questions, I told you initially about group discussion as well. Group discussion is a very critical situation, I would say. ग्रुप डिस्कशन उतना इजी नहीं होता है जितना इजीली हमको लगता है. इट्स नॉट अ सिंपल फेज जहाँ पे चार लोग आए, चार लोगों ने कुछ चार बातें की और हो गया. नहीं, नहीं होगा. ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे आप कभी भी या तो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए टू टॉक टू ओपन द सिचुएशन, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेकंड और द लास्ट. अगर आप ग्रुप डिस्कशन में कभी भी किधर से बीच में से आते हो जहाँ पे सिचुएशन का पॉजिटिव नेगेटिव सब हो चुका है, लेट्स से डीमोनेटाइजेशन मोनेटाइजेशन का टॉपिक चल रहा है, सारे पॉइंट्स हो गए, यू कैन नॉट वर्क एज अ फंक्शन और अ पर्सन हु इज जस्ट समराइजिंग द एंटायर सिचुएशन. यू शुड नेवर एवर डू दैट. You have to be very clear that you are supposed to be the one who will open the session, who will put across different points, who will ensure that whatever things you are talking about will always have some questions going further. Don't allow your pitch to be very high. Don't allow your expressions like banging the desk or something. Why this cannot happen? Why that cannot happen? You have to be calm enough, because the motive of group discussion is कल जब कंपनी में कुछ कॉमन मैटर्स पे डिस्कशन होगा फ्रॉम डिफरेंट डिविजन्स, मार्केटिंग है, फॉर्मुलेशन है, आईपीआर है, रेगुलेटरी है, you have to maintain the decorum of that particular situation. At the same time, you have to put across your information, your words as well. That's another most important phase which you have to take across. I see one question in the chat box from Amrinder Kumar. He says that why you want to join this field. अगर ये question आता है, then it's very obvious you have to be ready with why you like that particular field. What is it which drags you for that particular field? Like, let's say if you ask me why I want to be in business development, because I enjoy it. I enjoy talking to my customers, convincing them with regards to how my product is going to be helpful for them. So it's my know-how for the particular area which I am interested on. So I think इसका आंसर आपके पास inherently होगा, which you don't need to get into to a greater extent. Anything else which you ask, which you want to ask, anything else which you want to question across? Mira says, how are the packages what you get after B Farm? So Mira, it totally depends upon what stream you're getting into. If you get into मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको बहुत सारे लोग मेडिकल बिजनेस एसोसिएट भी बोलते हैं, कंपनीज लाइक जीएसके एंड ऑल. सो आई हैव सीन इट as low as to a great extent 2.5 lakhs per annum to as high as 5 lakhs per annum as well. Now this is for the stream which you get into. If you get into production, after BPharm you can get into production. तो production में जो packages जाते हैं वो भी 2.5 to 4 तक जाते हैं. So you can also think about getting into production if you are interested. Be clear what you want to do after BPharm. Are you willing to stop your education, or if you are planning to pursue MBA in the long run, then I would advise you that you straight away go for the medical representative or medical business associate job work, so that आपको MBA के टाइम पे ये एक्सपीरियंस काम आए. बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू गेट इनटू प्रोडक्शन, आपको आगे पढ़ना नहीं है या दिस इज व्हाट इज बेस्ट, यू कैन ऑलवेज गेट इनटू इट, बिकॉज फिर प्रोडक्शन पे से आप टेक ट्रांसफर में आ सकते हो. These are two major streams which I would support you to go across. Be clear with what you want in the long run. बोलते हैं ना, start with the end in mind. When you step out of your house, you are very clear what is your end destination. कौन से घर पे जाना है या कौन से थिएटर में जाना है या कॉलेज जाना है, आपको पता होता है. आप रैंडमली तो रास्ते पे चलते नहीं होते. सेम वे अपने करियर में क्यों रैंडमली चल रहे हो. बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट इन द लॉन्ग रन. लेट्स से इफ आई वांट टू एंड अप इन एमबीए इन द लॉन्ग रन, देन आई एम वेरी क्लियर दैट मुझे अभी मेडरेप या मेडिकल बिजनेस एसोसिएट का जॉब करना पड़ेगा. देयर इज नो पॉइंट मैं अभी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनूं और फिर मैं आगे जाके एमबीए में प्रोडक्ट मैनेजर बनूं. हाँ, अगर आप एमबीए से बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आप अभी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का करोगे तो भी चलेगा. Be careful about your present actions for your future actions. Whatever experience you gain between your B Farm and whatever post graduation you do, your post graduation M Farm हो, MBA हो, जो भी हो, MS हो, you have to be clear that whatever I am targeting as a part of my post graduation, where is it which it is taking me further on to. So if we are clear that मुझे यही करना है या मुझे वही करना है, in that particular case आपका जो गैप वाला ईयर है, आप वो फेज पे भी फिर वही कुछ चीज टारगेट करो. एंड इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज दैट व्हाट इज इट व्हिच यू वांट टू डू, if you don't have clarity with regards to whether I am willing to get into M Farm or whether I'm willing to get into MBA or some other area,
then I'll just recommend you one simple video. You can simply go to YouTube, type this on YouTube, MPharm MBA PharmaElite. You will come across two videos. Confused between MS, MPharm, Pharm MBA, Core MBA. These are very elaborative discussions. 1.5 घंटे का डिस्कशन था. ये 27 मिनट का एक ब्रीफ है. So आप ये दोनों वीडियोस देख लो. This is on the same channel on which we are viewing this particular video now. So it is always going to be there, and this would probably give you a better idea about what is required. Before I pass it across to the entire PharmaUDAAN team, once again, big thanks for this entire opportunity from entire PharmaUDAAN team, Somani sir, and of course the APTI Mumbai region. I hope we have delivered to our best. We could address across multiple situations, and yes, we did fall across a short with regards to different situations which we have further to discuss. But yes, I would be for sure willing to answer all the questions in the chat box and then pass it across to you. Once again, thanks a lot, Deepak sir, Somani sir, and Praveen Nayak sir. So the next question in the chat box says MS versus MTech में MS versus MTech pharma में क्या difference है? So Ramesh, the video which I just showed you in the screen, just go and check that in detail. But if you ask me, MS, MTech, MPharm, तीनों का syllabus to a good extent different था back in 2019 when the syllabus has changed across. But we are expecting that somewhere this all syllabus would come down on one line. Again, if you take syllabus of MTech in medical devices, which back in 2020 NIPER has designed it, it is something which totally is new and what industry needs. So yes, you can just say that probably there are some advanced version as per the industry requirements. What language we have to prefer while doing conversation. So Bharat, if the conversation is going on in English, पहला क्वेश्चन अगर इंग्लिश में आ रहा है, you take it further ahead only in English. Even if you know that the opposite person is of your native place, मैं भी गुजराती, तू भी गुजराती, तो भी उसके बारे में बात नहीं करने का, क्योंकि वो एक ही पर्सन अगर इंटरव्यू के लिए नहीं है और बाकी के भी है, it will create a problem and that would somewhere become a bit personal rather than professional. हाँ, अगर प्रोफेशनल लाइन पे एक बार इंटरव्यू क्लोज हो चुका है, देन इफ यू आर हैविंग सम कैजुअल डिस्कशंस एट दैट टाइम इट इज टोटली ओके. Shreyas has a question. What could be the average range package after MPharm fresher? So, Shreyas, I'll just turn around this question to a bit extent. I've seen people after MPharm going for a package as low as 2.5. I've seen people going after MS or MPharm at a package of as high as 13.5. I've seen people after Pharma MBA going at a package of as high as 28 lakhs as well. This all information is on the same channel where we are viewing this particular video now. Thanks a lot, Lokesh. If at all any of you wants any such sessions to be done further for your college, एक ग्रुप डिस्कशन पे 1 घंटे का अलग सेशन बन सकता है, रेज्यूम पे अलग बन सकता है. Just get in touch with the APTI team or Deepak sir, and we shall do the needful again. That's not a problem with a different discussion altogether. Trishul has another question. Add-on courses with degrees are necessary in current situation or not? So Trishul, just to put across your question in a different way, do you think whatever information is being provided across in our syllabus has the needful what the industry needs? My first experience after my first year of MS at NIPER Hyderabad when I stepped into Cipla was what I read in lab, what I did as an experiment for liposomes manufacturing, and what industry scale does it for liposome manufacturing is totally different. तो अगर मैं वो पढ़ नहीं रहा हूँ जो इंडस्ट्री को चाहिए, या अगर वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा कोरिलेट नहीं हो रहे, then there is a good amount of gap. And if any such courses can fill that gap, if they can take you to the level closer to the what industry needs, then I would advise you that you should do that. There is no point that you should leave it. If it is adding on to your knowledge, there is no point of discussion that मैं उसको छोड़ क्यों दूँ. अगर वो आपका नॉलेज बढ़ा ही रहा है, if it's not taking away anything from you, then you should always do it. Be careful about whichever wherever courses you are doing, because a lot of things would depend across that. So this is PharmaElite's website. You can go across on our certificate courses portal. In your certificate courses, you will see different courses like clinical research, formulation development, IPR, marketing management, and all those different courses. You'll have students testimonials and all as well. So whatever certificate courses you choose across, be careful that it should be something where you are planning to have your end career. सिर्फ वो एक करने के लिए या फ्रेंड कर रहा है मैं कर लूँ, ऐसा मत करना. बट येस, स्ट्रीम्स लाइक IPR, regulatory affairs, these are something which would be always evergreen. Most of the streams somewhere closely might help you to with regards to, you know, somewhere the knowledge of IPR and RA would come into the picture for sure. So probably you can keep that as an alternative as well.
which common questions asked in pharma IT company. So Anand, I have seen two types with regards to pharma and IT. One is business analyst, as I said initially, क्योंकि हमको फार्मा में कहीं पे भी कोडिंग पढ़ाया नहीं जाता है, ना ही हम सॉफ्टवेयर्स पढ़ते हैं ज़्यादा एक्सटेंड में. इनफैक्ट सॉफ्टवेयर्स लाइक स्क्रॉडिंजर, टैबलेयू, पावर बीआई वो अभी तक हमारे लिए उतना फुल फोर्स आया नहीं है. स्क्रॉडिंजर आया एज फार एज आई नो. टैबलेयू, पावर बीआई, आई डाउट वेदर वी हैव हर्ड टू दैट ग्रेट एन एक्सटेंट. सो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग आते हैं वो पाइथन और ये सब सीख के आते रहते हैं. पाइथन तो हमारे लिए एक एडवांस वर्जन होता है. बट होता क्या है, दे आर वर्किंग इन फार्मा कंपनीज, बट उनको फार्मा का नॉलेज नहीं होता है. वो एक सॉफ्टवेयर में डेटा कैसे डाल के क्या ग्राफ बनाना है, क्या इंटरप्रेट में स्टेटमेंट देना है, वो दे देगा. बट वो लेवल तक नहीं दे पाएगा जो लेवल तक फार्मा का बंदा दे सकता है, क्योंकि फार्मा के बंदे को फार्मा के पॉइंट से चीजें पता है. दैट्स हाउ यू कैन जस्टिफाई. आई जस्ट पुट इट अक्रॉस इन सम अदर वर्ड्स. So when you talk about few MNCs, I cannot name them over here in this platform. We were running a certificate course on business analyst back in 2020. तो दैट वाज द डे. तब तक मुझे ऐसा लगता था कि बिजनेस एनालिस्ट सिर्फ मार्केटिंग के बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर यूज होता है, टैबल्यू, पावर बीआई. देन देयर आर फ्यू एमएनसी जो टैबल्यू, पावर बीआई आर&डी में भी यूज करते हैं, लैब स्केल पे भी. अभी शायद सिर्फ थर्ड और फाइनल ईयर वालों को ही समझेगा, दूसरों को ना समझे, सो डोंट वरी. तो लेट्स से मैंने टैबलेट के अलग अलग बैच लिए, 10 बैच लिए. 10 के 10 बैच में मैंने जो भी टैबलेट बनाए सब में डिसइंटीग्रेंट, जो टैबलेट तोड़ता है, डिसइंटीग्रेंट का काम होता है टैबलेट तोड़ना. जो भी मैंने डिसइंटीग्रेंट यूज किया वो 10 के 10 टैबलेट में अलग कॉन्सेंट्रेशन. किसी में 0.5% है, किसी में 2, किसी में 4. तो मुझे समझेगा कि जब मैं डिसइंटीग्रेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ तो डिसइंटीग्रेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ रहा है. Yes, there are softwares like Quality by Design and all to identify different parameters, but this is something which works out onto advanced level, which gives you a better representation. Python, to be honest, मुझे application नहीं पता है, मैंने खुद नहीं सीखा है. हमारे सिलेबस में कहीं दूर दूर तक है नहीं, इसलिए ये जॉब्स जो कोरली हमारी है वो इंजीनियरिंग वाले लेके जाते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन, सीएसवी? आई डाउट हम वो क्यूए वाला वैलिडेशन भी रेयरली पढ़ते हैं. कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन तो बहुत दूर की बात है, हम नहीं पढ़ते. एक्सेल को भी वैलिडेट करना पड़ता है, एक्सेल में भी गलतियां होती है. दैट्स अ नेचुरल फेज व्हाट अ एक्सेल सिस्टम हैज. सो टू बी ऑनेस्ट, फार्मा आईटी कंपनी के क्वेश्चंस आई एम नॉट अवेयर अबाउट, बट यस आई डू हैव माय फ्रेंड्स whom I can connect you with to get information. So you can probably connect on to this two numbers which are there in the footer, and they shall help you out. I request you to please fill in the feedback form which is being pinned in the chat box, so that we get an idea whenever we wish to do any such sessions further, whatever improvements are required. I repeat, you can reach out to your college faculties or Deepak sir, so that if any such sessions are required, we can do it again for you. SaaS programmer is growing, to be honest, but how long it is having a major industry with pharma backgrounds, that's a different phase, I would say. So take a calculative call, because you will have competition from statisticians जो ऑलरेडी 3-5 साल से वही करते आ रहे हैं, और हम वो एक फेज के बाद करने वाले. सो दैट्स अ वेरी मच कैलकुलेटिव कॉल विच आई वुड एडवाइज यू टू टेक अक्रॉस. अचीवमेंट का सर्टिफिकेट अटैच करना हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज सौरभ यू कैन ऑलवेज मेंशन वन स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू योर अचीवमेंट सर्टिफिकेट. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. थैंक्स अ लॉट जागृति, सुमित, सुचित्रो. Okay, so Prasad has a separate question. He says, what common questions in R&D interview? अगर आप R&D में फॉर्मुलेशन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसके क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस अलग रहेंगे. अगर आप R&D में एनालिटिकल के लिए जा रहे हो तो उसके सेट ऑफ क्वेश्चंस अलग रहेंगे. फॉर्मुलेशन के लिए जा रहे हो प्रसाद, तो क्वेश्चंस माइट टर्न अराउंड व्हाट डोजेज फॉर्म्स यू हैव वर्कड ऑन टू, what are the different dosage forms which the market is working across, which are the newly launched product, वो newly launched product कौन से dosage form में था, what was its advantage, वो कौन से टेक्नोलॉजी से बन सकता है. So be careful whichever company you are going for an interview. Let's say if you are going for interview to someone like Novartis, Dr. Reddy's, Zydus, Lupin, Cipla, शायद इन सबको पता है hot melt extrusion क्या होता है. You know, so based on the company which you are going on to, you should be careful about what technical know-how they would be requiring at their place. Noted, Shubham. Probably we shall plan across one session for group discussion again with the APTI team. What are the best add-on courses with degree? So there are a lot of add-on courses which you can do across, as I showed you onto our portal as well. But I would advise you that take up those certificate add-on courses only जो आपको फ्यूचर में आपके गोल के साथ अलाइन होता हो. अगर मेरे को लॉन्ग रन में डेस्क जॉब करना है, इफ आई एम ओके विद समथिंग लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, then I should keep my certificate courses which are closely with regards to intellectual property rights. There is no point me doing certificate course on clinical pharmacovigilance or something like that, clinical research and all, जब मुझे करियर मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में करना. So be careful what you are
डिसाइडिंग फॉर योरसेल्फ एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली. एक सेपरेट स्किल सेट आपको हमेशा कुछ सेपरेट रिजल्ट देगा ही, इमीडिएट नहीं बट लेटर रन में आपको वो इफेक्ट दिखेगा ही. It's not important to be doing what you are doing. It's more important to ensure how you can be different from the other 2000 in the race. Every year, the number of students who pass out from pharmacy in M-Pharm is probably more than 2000, 4000, I suppose. And at the same time, freshers के लिए उतने jobs open होते हैं क्या? अगर नहीं होते और हम वही कर रहे हैं जो हम सालों से करते आ रहे हैं, 5000 लोग जी पैट, 50,000 लोग जी पैट लिखते हैं, सॉरी, वो 50,000 में से शायद 10 या 20,000 लोग तो आगे एमएस या एमफार्म या एमटेक करती है. तो हर साल क्या वो 10 या 20,000 जितने जॉब्स ओपनिंग आती है क्या? अगर नहीं आती है तो फिर जो भी लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स आती है, समवेयर आई हैव टू fill across that gap for myself to ensure that I can get through that. So that's another phase which you can think across. So can you tell us a bit about pharmacovigilance, about jobs related to it? So Rahul, there is a lot to know about pharmacovigilance and the jobs related to it, I would say. So when it comes to pharmacovigilance, you can just go to YouTube, just type pharmacovigilance, pharma, so there is one entire session on pharmacovigilance. You can observe that. So मैं जो भी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, somewhere we have ran certificate course for this. I know things in and out about it. That's the reason I'm able to talk about it. ऐसा नहीं है कि मैंने pharmacovigilance भी किया है, मैंने ये भी किया है, वो भी किया है, नहीं. मैंने जो जो सुना है, जो मेरे colleagues हैं, on the basis of their interactions and their outputs, and the detailed information is right over here on the same channel. You can just click on the subscribe button and press the bell icon. Next time any such sessions happen, you will get a direct notification. Sriyash is having another question. Could you suggest some add-on courses that helps us to acquire more skills required in our industry? So Sriyash, just to add on to your question, I would say streams like business analyst, data analyst are growing. You are already aware. Be careful what is it which you want. If you are someone who wants to do a desk job, only then go for business analyst, data analyst, and all. If you're okay with traveling around, go for courses of marketing management, go for courses with regards to आईपीआर जो आपको प्रोडक्ट एक्सटेंशन या अलग मेथोडोलॉजी से भी टारगेट करने के लिए हेल्प कर सकता है, पोजीशनिंग के लिए हेल्प कर सकता है बेस्ड ऑन पेटेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट यूमायरा. 25-26 साल हो गए, हर साल कुछ पेटेंट एक्सटेंशन आ जाता है. सो दैट्स अ डिफरेंट एड ऑन विच यू एज अ मार्केटिंग पर्सन, इफ यू हैव अ आईपीआर हैक, कैन ऑलवेज बी एड ऑन फॉर यू पैरेलल. And with regards to other skills which you will require in the industry, as I said initially, it's more about basics and it's more about how you communicate. टेक्निकल नो हाउ, आप कोई भी इंटरव्यू के लिए कभी भी जाओ, आप 4 बुक पढ़ के जाओगे, 4 हफ्ते पहले से प्रिपरेशन चालू करोगे, तो आई एम 1000% श्योर यू विल बी एबल टू ब्रेक दैट. दैट वोंट बी अ मेजर गेम. थैंक्स सुचित्रा, मयूर, थैंक्स. All right, I suppose we are done. Done. After B Pharmacy, we can apply for regulatory affairs. Yes, Roshan, even people are being hired into that particular stream, so you can always apply for that. And at the same time, you are also eligible for courses with regards to regulatory affairs and fresh placements and all as well. तो अगर आपको उसके बारे में भी एक detailed information वाला session चाहिए, so even that's there in the channel. So a lot of information which we are talking about is already there for you if you want to know a lot of details about it. Before I end up the session, I would just like to add on to few quick insights. First and foremost, do those things which you enjoy. Don't do it for the sake of doing. A lot of people tell me that अगर हाई पैकेज मिल रहा है तो मैं कोई भी जॉब कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा पैकेज किस में मिलेगा बताओ. ऐसा नहीं होता बॉस. यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इफ यू आर नॉट एंजॉइंग दैट पर्टिकुलर जॉब. सो बी क्लियर अबाउट व्हाट योर लाइकिंग इज. अच्छा, बहुत बार ये होता है मुझे फाइनल ईयर तक यही समझ में नहीं आया कि मुझे पसंद क्या आ रहा है. whether I'm enjoying this stream, whether I'm enjoying that stream, मुझे वही पता नहीं चल रहा. Then you have to jump across one among those two streams. Don't take a break. Taking a break is any which ways you are being stuck onto where you were stuck a year back as well. So it's better to jump into one of those streams क्योंकि उसका 2 में से 1 साल तो निकल जाएगा. Always have a kind of approach wherein you can do something which you wanted in the long run as well. Like let's say मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे अगर एमएस करना है या फार्मा एमबीए करना है, तो मुझे ये चीज़ तो पता है कि अगर मैं आज एमएस करता हूँ तो फार्मा एमबीए तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, डिस्टेंस एमबीए कर सकता हूँ, आई हैव ऑप्शंस अवेलेबल विद मी. बट एक बार अगर मैंने एमबीए कर लिया तो गोइंग बैक टू एमएस, गोइंग बैक टू लैब वर्क इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. सो बी केयरफुल अबाउट दैट पर्टिकुलर केस. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, बट इन इंडिया एमएस की डिग्री मिलती है एंड दैट्स ओनली फ्रॉम नाइपर एंड दैट इज पॉसिबल. So that's another thing which I want to add on to your field. Whatever things you read across in college, please do it from case study point of view, from industry point of view. Short note point of view मत करो.
रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके सोचो, अगर कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, मैं कुछ पूछना चाहूँगा, अगर मैं 2 ग्लास लेता हूँ, I've taken 2 glasses of water with me. I've stopped screen sharing, okay? Just consider there are 2 glasses. मैंने 2 ग्लासेस में एक-एक टैबलेट डाला, ठीक है? दोनों ग्लासेस में मैंने एक-एक टैबलेट डाला। प्रोबेबली थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर्स यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। दोनों ग्लास में एक-एक टैबलेट डाला है, एक ग्लास का टैबलेट पूरा टूट गया, चला गया, पूरा डिसॉल्व हो गया। दूसरे ग्लास का टैबलेट टूटा ही नहीं, वो स्वेल होते जा रहा है, टूट ही नहीं रहा है। व्हाई? 4 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, वो टैबलेट टूटा नहीं, स्वेल हो गया। व्हाट कुड बी द रीजन? कम ऑन, क्विक। व्हाट कुड बी द रीजन कि वो टैबलेट टूटा नहीं, वहीं का वहीं है? Pranav, there is a course on business analyst on PharmaElite's web portal as well. So probably you can write to us. You will get detailed information on the same as well. Quick, quick, quick. वो टैबलेट, अच्छा कोई बोल रहा है कोटिंग थिक है, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग अदर देन द कोटिंग पार्ट ऑफ इट? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कुछ अलग है जो शायद तुमको पता होना चाहिए था। कोटिंग डिफेक्ट्स, पीएच डिफरेंसेस, पॉलीमर, एनीथिंग एल्स? अच्छा चलो मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। जो दूसरे क्लास का टैबलेट है जो टूटा नहीं है, ठीक है, वो या तो इमीडिएट रिलीज टैबलेट है, या तो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट है, या तो कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट है, या तो डी ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। ग्रैनुलेशन प्रॉब्लम होते, बाइंडर ऑन पॉइंट किया। कंट्रोल्ड रिलीज के टैबलेट हो या फिर सस्टेन्ड रिलीज के टैबलेट्स हो, वो टैबलेट्स कभी टूटते नहीं है। दे डोंट हैव अ डिसइंटीग्रेशन टाइम एज अ पार्ट ऑफ द लिमिट। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स। प्रैक्टिकली चीज़ों को पढ़ो रादर देन टेकिंग ओनली थियरी, एंड इट अप्लाइज इवन टू योर एमबीए कॉन्सेप्ट्स। अगर आप बोलते हो मार्केट सेगमेंटेशन एंड ऑल, यू शुड बी एबल टू विलिंगली ऑब्जर्व ऑल दोस थिंग्स हैपनिंग अराउंड। हाउ मेनी ऑफ अस हैव ऑब्जर्व्ड दैट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अलग अलग नाम के शैम्पूस बेचता है? शायद हेड एंड शोल्डर्स भी उसका है, क्लिनिक प्लस भी उसका है। भाई एक ही बंदा अलग अलग सेगमेंट में क्यों जा रहा है? शायद डव भी उसका है, पियर्स भी उसका है, लक्स भी उसका है, संतूर भी उसका है। क्यों अलग सेगमेंट टारगेट कर रहा है? कोई टारगेट कर रहा है नॉर्मल क्राउड जो शायद सिर्फ अफोर्ड कर पाएंगे। ऑन द लोअर साइड संतूर, आई एम नॉट सेइंग संतूर इज अ चीप ब्रांड, जस्ट एन एग्जांपल। ऑन द अदर साइड क्रीम ब्रांड्स, पियर्स, डव, उनके टारगेट्स अलग होते हैं। सो जस्ट practically observe whatever you're doing. That's one of the important thing which I would like to tell across. And most importantly, कभी भी अगर कुछ भी information चाहिए, APTI, Deepak sir, entire Pharma Udaan team, and Somani sir is always there. So feel free to write to them. Thanks a lot, Deepak sir. I'll add you to the meme stream. Thanks a lot, students, for bearing me for the last 1.5 hours. But I hope it was totally worth your time. Thank you so much once again. Am I audible, Dharmesh sir? Yes, sir. I've added you to the stream and Uh, you're out. okay. So, on behalf of PharmaUDAAN APTI Mumbai region team, I'm very thankful to Dharmesh Mehta sir for such a awesome session, and we will like to have same more sessions with you. So, really, we are grateful and thankful to you. On behalf of our team, Dr. Rakesh Somani sir, from my side, from Praveen sir, and everyone. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks a lot, Deepak sir. And please do let us know whenever such situations and whenever such sessions are required. We'll be more than happy to put it across again. Okay. Thanks, Okay, sir. Arshana. Thank you Thanks, so sir. much, sir. Thank you. Yeah. Yeah. So I suppose shall we close it or you still have some questions? I'm okay answering them if you don't have exams coming up tomorrow. So let's take maybe a question or two more. कहाँ थे हम? Where were we? Is it, sir, is review and research publication important for getting this job? If you get into, it's always an advantage. कुछ loss नहीं है. दो में से एक पेपर, review paper is something which you can do during your bachelor's as well. Research paper can be the long term target, but वो करो जो scalable हो, जो patentable हो. Conventional मत करो, मेहनत ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है. So let's do something which is going to be useful for us in the long run. Anything else which you wish to ask across or you wish to put across, or if you need any supporting such sessions from the entire PharmaElite team, please feel free to write onto these two numbers. Maybe you can WhatsApp them or you can call them or write us across an email. We are always going to be there for you. Thank you so much for your time. All the best for your exams coming across. We'll meet soon on the other side. Thanks a lot once again.